Hello guys, so my name is Affordablerates and welcome back to day 2 in Manali. So finally I'm going to Jogini Falls today and day 1 की जो वीडियो है वो already uploaded चैनल पे, so if you want you can go and see that. So day 1 की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन गई थी, like around 22 or 23 minutes. So in this video I will just try to make it short. I will try to only show the things which really matters and try to make a video little shorter from yesterday. So अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ एंड ये जो हॉस्टल है वो काफ़ी सही लोकेशन पे है क्योंकि यहाँ से जोगनी फॉल जो है वो अराउंड 4 किलोमीटर्स है. सो आई विल बी रेंटिंग आउट स्कूटर लाइक और स्कूटी, सो आई एम गोइंग फॉर दैट ओनली. एंड सो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ मेन रोड पे और वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे स्कूटी कैसे रेंट कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स रखते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू each and every details of that, so make sure that you are watching this video till the end and most importantly that you are subscribing to this channel. So आज के भी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली थी, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू वॉक टू द मेन रोड. ऑलराइट, सो मैं आपको मिलता हूँ सीधा शॉप पे जहाँ पे हम लोग रेंट करेंगे स्कूटी. Hello guys, so welcome again to the video. So officially I'm starting the trek for Jogini Falls. So मैंने जो स्कूटी है वो पीछे पार्क किया है. तो यहाँ पे ऐसा particularly paid parking and free parking both are available over here. So whichever you wanna use you can use. And अभी दोपहर के 12 बज रहे. So I don't know there are peoples are here or not. Actually like मैं बार बार गलत जगह पे चले जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों. So it's happen, you know, when you are traveling alone to a new place. So यहाँ पे बोर्ड नहीं है कोई भी कि एक्चुअली किधर पे जाना है फॉर जोगनी फॉल्स, बट दो और आदमी हैं जो मेरे आगे आगे जा रहे. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग देम ओनली टू रीच टू द टॉप एंड वहाँ पे देखते क्या है. एंड बाय द वे फ्रॉम हियर यू कैन सी द व्यूज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड लेट मी रीच टू द टॉप and I'll show you more things. So यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स बने जिसको you have to cross for this particular waterfall. Again I took the wrong side. So just make sure like you can see यहाँ पे रिवर कितना फास्ट बह रहा है. एंड all the small stalls which are not opened yet. I don't know क्यों, because पीछे साइड पे बहुत सारे कार एंड बाइक्स लगी थी. सो आई बिलीव यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. Alright, so this is the main starting point of Jogini Falls. And you can see like
people are taking water from here, and this is the way to actually go Jogini Falls. So I will try my best to actually reach to the top, because काफ़ी ज़्यादा high altitude है and you can understand that I'm too tired. और ये बस अभी स्टार्ट है. Alright, so from here I will go to the top alone and I will meet you in the top. Okay, so I've taken a stop for 5 minutes down here with this amazing view of the falls, and there are the mountains. And now again we'll start the journey to Jogini Falls. Alright, so finally guys, I made it to the top, and it's pretty exciting. आपको बैकग्राउंड से वाटरफॉल का वॉइस आता रहेगा. Just I'm trying to get over there. You can see the waterfall. So this is the Jogini Waterfall guys, and let's just it's so refreshing. I'll show you from the back camera. So there are small water particles which are coming to my face, and it is so refreshing. So I'm just going back to the backside of this waterfall, because I have seen so many reels. People go to the backside of this waterfall, particular waterfall. So I will also just try to go to the backside. I can see many people over here who are taking videos and doing some stuff. So I will also try to do the same. So guys, this is the actual way where you can actually go to inside of this waterfall. But I'm not going inside because the road is a bit slippery. So I'll just try to get over here and then just see if I can take some shots or not. Alright, so this is the backside of the waterfall, and you can actually go to down that point, but I'm not going to that way because my shoes are pretty dirty and it has become too much slippery, so I don't wanna get into any trouble. So I will just wait for around 5-10 minutes here and we'll just go back to my hostel. Alright guys, so I'm just now leaving this beautiful waterfall behind and actually going back to my scooty. So अभी फ़िलहाल के लिए 2 बज रहे और जो मेरे को स्कूटी जमा करनी है वो जमा करनी है 8 बजे. सो आई थॉट कि क्यों ना एक दूसरे जगह पे चला जाए
जो कि है गुलाबा व्यू पॉइंट. एंड देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट क्रो ओवर हियर. उड़ गया, नहीं तो आपको दिखाता था, बहुत ही खतरनाक था. सो एंड व्हेन यू आर कमिंग डाउन, so make sure that whenever you are putting your legs, so just wait. So ये जो stairs है वो आधे रास्ते तक है, and later on just you have to trek. and अभी उतरते टाइम मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. लाइक मैं नीचे ही जाने वाला था, because I thought that someone is calling from behind, but there is no one. And just I turned around and my one leg just got into trouble, but I'm safe. और कहीं ज़्यादा लगा भी नहीं, but पैंट में थोड़ा सा एक जगह पे कीचड़ लग गया. So I will washing it out. And again this is the waterfall. Alright, so now I will directly meet you at the Gulaba viewpoint. हेलो गाइस, हम जा रहे हैं वाटरफॉल घूमने. हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर दो. So I met with these two beautiful kids over here, and they're really nice. So this is the place where you actually can park your bike and start the trekking from right here. So it's totally free to park over here, and आगे में paid parking भी है, तो whatever you wanna use you can use. And this is the bike which I rented out. So now I will moving out to Gulaba. Hi guys, so I got stuck in nowhere. I don't know where to go. And मैंने यहाँ पे एक आदमी से पूछा था, तो he said that गुलाबा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, and गुलाबा से आगे कोई भी रास्ता नहीं है. But Google Map is showing something else. So I'm not going ahead because ये स्कूटी जो है वो रेंट की है, and I don't wanna take any risk. So बस with this pretty amazing view, I'm going back to my hostel.